Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss differentiability of a function of complex variable. पहले वाले लेक्चर में we discussed limit of a function of complex variable, then continuity, extended point, limit point, all those stuffs we have discussed. So today we'll discuss differentiability of function of complex variable. Okay, so let us take a function fz which can be written as u plus iota v, where u itself is function of x comma y. U is function of variable x and y, and v is also a function of variable x and y. And here z is nothing but x plus iota y. When z is x plus iota y, so obviously u and v will be function of x and y. So this is our function. So we are to discuss जो fz है यहाँ पे इसकी differentiability में discuss करेंगे. Okay. So the definition for this function fz is differentiable at point say z equals to z naught if limit z tends to z naught fz minus fz naught divided by z minus z naught exists. Okay, so if we are going to check कि fz z equals to z0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, then ये लिमिट हमें देखनी होगी. If this limit exists, then we say that function is differentiable at point z equals to z0. Okay, or we can write if we replace z here, if we replace z by z0 plus h. Okay, so z is approaching towards z0, then h will approach towards 0. So इसी लिमिट को we can write limit h tends to 0 f z0 h minus f z0. When z will be z0 plus h, it will be h. Okay, so again if this limit exists, then we say that fz at z equals to z0 exists, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं f dash z0 से. Or you can say differentiable of function fz with respect to z at z equals to z0. These are some notations. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे one more thing is important, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखो we are discussing this differentiability in complex plane, argand plane में ये सब discuss कर रहे हैं हम लोग. Basically we say this is z plane also. ठीक है. तो in z plane जो यहाँ पे h है, this h will be of someone h1 plus iota h2 type, where h1 h2 are from real number system. ठीक है. So यहाँ पे जो h approaching towards 0, so it will approach towards 0 from many direction. It may come through x axis, y से आ सकता है, radial direction में आ सकता है, radial में भी. So there will be infinite ways to approach towards 0 0. Okay, so basically differentiability of a function at any point, let us say z equals to z0. So for that, this or this means these are two ways to represent the same limit. This limit should exist. Okay, so let us take some examples. I hope your definition clear है. So let us take some examples in this regard. Let us first discuss very simple function fz equals to z. Okay, so इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें देखनी है एट z equals to 0. Okay, so यहाँ पे z नोर क्या हो गया, z नोर is 0. So limit z tends to 0 fz minus f0 divided by z minus 0. Basically z नोर को हमने 0 रिप्लेस किया. So this will be limit z tends to 0 fz is z minus f0 is 0 divided by z, that is 1. So f dash 0 is 1. Because this limit exists and the value is finite, so we say that function is differentiable. This function is differentiable at
z equals to 0 and the value of that differentiation is 1. It was very basic question. Now let us take some good question. So let us see question 2. Okay. अच्छा, वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आइलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया, पोलर फॉर्म जो होती है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. सो ये फॉर्म लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत यूजफुल है. ठीक है. सो लेट अस से एफ जेड इक्वल्स टू से एक्स स्क्वायर वाई divided by x square plus y square where when xy is not 0. ठीक है. 0 when the point is at origin. so इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में ability of f z at z equals to 0 हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. so then क्या होगा, लिमिट z tends to 0 because z naught is 0 here. f z क्या है, x square plus y square minus f0 पे ये डेफिनेशन फॉलो होगी. अच्छा, f पे ये डेफिनेशन फॉलो होगी because z is approaching towards 0, it is not 0, so this definition will follow. Divided by z can be written as x plus iota. So this is limit xy tends to 0 0. Okay, z is x plus iota y. So when z is approaching to 0 तो x y भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई. ओके, जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस टाइप की टर्म दिखें देन इट इज बेस्ट कि हम लोग पोलर फॉर्म यूज करें. सो लेट अस रिप्लेस एक्स बाई आर कोस थीटा एंड वाई बाई आर साइन थीटा. सो व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0, जब एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 तो आर टेंस टू 0 होगी. थीटा में भी एनी वैल्यू. ये लिमिट क्या करना हो जाएगी, लिमिट r टेंस टू 0 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स की वैल्यू y की वैल्यू r साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो गया प्लस r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा. तो यहाँ से एक r बाहर आ गया. तो बेसिकली r क्यूब यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से r क्यूब. सो विल हैव लिमिट r टेंस टू 0 cos square theta sin theta divided by cos theta plus iota sin theta. Now limit r tends to 0 but इसमें r है ही नहीं, so we can directly write this as cos square theta sin theta cos theta plus iota sin theta. Now ये जो लिमिट है ये थीटा पे डिपेंड कर रही है. मीन्स जो थीटा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसकी मॉडुलस r है, थीटा है. तो अगर थीटा हमने पाई बाई 2 ले लिया तो इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है यहाँ पे, और अगर थीटा 0 ले लिया तो ये 0 आ जा रही है. मीन्स थीटा जो है मतलब जिस डायरेक्शन से हम मूव अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को, उस पे इसकी लिमिट डिपेंड कर रही है. बट लिमिट तो यूनिक होनी चाहिए. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट. सो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू 0. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. अगर इसमें कंटिन्यूटी पूछा जाए हमें तो कंटिन्यूटी में क्या होगा, सिंपल कंटिन्यू में तो हमें लिमिट सही. अगर इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी की बात हो तो क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 0 दैट इज एक्स वाई टेंस टू 0 0. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस शुड मीन्स यही है लिमिट. बेसिकली लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड, यही तो लिमिट है. इसकी z इक्वल्स टू 0 पे लिमिट देखनी है. तो ये क्या आएगा इसमें, वही लिमिट r टेंस टू 0 r क्यूब कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. जैसे ऊपर किया वैसे हमने वैल्यू पुट कर दी ना, r स्क्वायर. तो यहाँ एक r रह गया, तो r व्हेन अप्रोचेस टू 0 तो ये 0 हो जाएगी बिकॉज 1 r इज देयर. सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, और f0 0 की वैल्यू क्या है, 0 है. सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट लिमिट
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 800. सो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, सो हम एक चीज यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, जैसा कि वन वेरिएबल में होता था इन सिंपल रियल नंबर सिस्टम आल्सो दिस वाज ट्रू. A continuous function may or may not be differentiable, but a differentiable function will always be continuous. ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो गई, सिंपल. बट अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस हो भी सकता है. मतलब इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. ओके, तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये कंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, so let us take one more example.